Good evening, you're watching Hornbill TV's Prime Time. First headlines. Union Home Minister Amit Shah on Tuesday blamed the Congress for the terrorist activities carried out by Pakistan in India and said that the root of all terrorism is Pakistan and Pakistan is Congress' mistake. A day after two Catholic nuns from Kerala were arrested in Chhattisgarh, Congress MPs from Kerala, including Shashi Tharoor, held a protest demonstration at Makardwar on Parliament on Tuesday. The Supreme Court on Tuesday posted for hearing a batch of pleas challenging the ECI's move to conduct special intensive revision of electoral rolls in Port-bound Bihar. The pleas are listed for August 12 and 13. India's 19-year-old chess sensation Divya Deshmukh created history on Monday by defeating fellow Indian and world number 5 Kiranur Humpy in the final of the Women's Chess World Cup at Batumi, Georgia. Now the news in details. While the tiger population across the globe reports of decreasing, India has a different story. Recent reports suggest that the tiger population in the country is going up, and according to Uttar Pradesh Forest and Environment Minister, Independent State Charge Dr. Arun Saxena, the credit goes to the Prime Minister Modi and UP Chief Minister Yogi Adityanath. On the occasion of the International Tiger Day, Dr. Saxena spoke to Hornbill TV over the issue. देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो 2025 में आज ये लखनऊ प्राणी उद्यान के प्रांगण में मनाया जा रहा है। ये एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम है जिसको कि लखनऊ प्राणी उद्यान की वेन्यू पे आज यहाँ सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया। हमारे बीच में हमारे विभाग के दोनों मंत्रीगण और सीनियर अधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ताकि बाघों के संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के कार्यक्रम किए जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके कि बाघों का संरक्षण किस लिए आवश्यक है, जंगलों का संरक्षण किस लिए आवश्यक है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी सुना कि बाघ हमारी एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज़ हैं। इसका मतलब है कि सबसे ऊपर वो हमारी फूड चेन में आते हैं। यदि हम उनका संरक्षण कर लेंगे तो नीचे वालों को बचाने में और ज़्यादा अधिक सहयोग प्राप्त होगा, जंगलों को बचाने में और ज़्यादा अधिक सहयोग प्राप्त होगा। आप देख Kachar police in Assam have arrested 38 thieves in a major anti-theft operation conducted over the past 24 hours in Silchar city. Senior Superintendent of Police Numal Matta briefed the media at the Silchar Sardar police station on Tuesday evening. He informed that the 5 separate teams, each headed by Deputy Superintendent of Police, were mobilized to crack down on a rising wave of thieves in the region. The majority of those arrests are reportedly drug addicts. Recovered items include gold ornaments, 3 motorcycles, 2 bicycles, aluminium and copper wiring, household goods, batteries, wristwatches and smartphones. All arrested individuals were produced in the court this evening. SSP Matta confirmed that further investigation is underway to uncover any wider network involved in the thefts. জিলাৰ যিসকল নাগৰিক আছে, নাগৰিক সমাজ আছে, তেওঁলোকৰ কিছু সংখ্যক লোকে আহি পেলাই আমাক দেখা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে অতি সম্প্ৰতি কালত কিছু চুৰিৰ সংখ্যা কিছু বাঢ়িছে। গতিকে এই কাৰণে আমি এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যোৱাকালি আমি নিশা মানে আজি পুৱতি নিশা প্ৰায় 5টা টিম আমি ৰেডি কৰিছিলোঁ। 5টা টিম মানে আমি ৰেডি কৰি 5টা টিমত আমি জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এই যিবিলাক চুৰ যিবিলাক আছে বা যিবিলাক চুৰি কাৰ্য সম্পাদন কৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ এটা লিষ্ট তৈয়াৰ কৰি আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা কঠোৰ অভিযান চলাইছিলোঁ। আৰু অভিযান কালত গোটেই নিশাই আমাৰ এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত জিলাখনৰ সকলো আমাৰ বিষয়া আৰু পুলিচ কৰ্মী ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে গোটেই ৰাতিৰ ভিতৰত আমি 38টা চুৰ বাইক লিফ্টাৰ আছে, ইলেক্ট্ৰিক বস্তু চুৰ কৰা আছে আৰু বাচন বৰ্তন চুৰ কৰা এনেকুৱা ব্যক্তি আছে। সকলোবিলাকক মিলাই আমি 38জন চুৰ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ সামগ্ৰী চুৰি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ চুৰি সামগ্ৰীবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি দেখিব প্ৰেছাৰ কুকাৰ আছে,
तार पाছত 3টা বাইক আছে तार पाছত আপুনি দেখিব যে বেটাৰী আছে तार पाছত টিভি আছে এনেকুৱা কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী বৃহৎ পৰিমাণৰ সামগ্ৰী আমি মোটৰ আছে আমাৰ ফেন আছে এনেকুৱা কৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু ইয়াৰ লগতে এই যিসকল চুৰ বা চুৰি কাৰ্য সম্পাদন কৰা ব্যক্তি তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ বহুত সংখ্যক লোক ইয়াৰ বহুত সংখ্যক লোকৰ ভিতৰত কিছু লোক আছে যিসকলে ড্ৰাগ এডিক্টেড হয় আৰু তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ কাৰণে পঠাইছো Calling the April 22 Pahalgam attack on intelligence failure, leader of the opposition Rajya Sabha Mallikarjun Kharge on Tuesday called on Home Minister Amit Shah to take responsibility for the attack. Speaking during the debate on Operation Sindoor in the upper house, Kharge raised questions on the accountability of the government, further claiming repeated intelligence lapses in the country since the Bharatiya Janata Party came to rule. The LOP further stated that it was not the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha who was supposed to take responsibility for the Pahalgam attack being a security failure, but should have been the Home Minister Amit Shah. सर, मैं इंटेलिजेंस फेल्योर की बात डिप्टी चेयरमैन जी अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना? हाँ, वही जिम्मेदार है। सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था। तो जिम्मेदार हो, उनको जिम्मेदारी फिक्स करो उनके ऊपर। ये तो डिफेंस मैटर नहीं है, नड्डा साहब, ये हेल्थ नहीं है, ये उनका जो जाने का था ये फेल्यूर होकर अब बढ़ चढ़ के ज्यादा मैं देखा वह भाषण भी सर तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे, मैं जैसा आपको देख रहा हूं तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहां आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है 5 दफा पहलगाम में ही अटैक होते रहा, इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। A day after 2 Catholic nuns from Kerala were arrested in Chhattisgarh on charges of human trafficking and religious conversion following insistence from Bajrang Dal members, Congress MPs from Kerala including Shashi Tharoor held a protest demonstration at Makar Dwar on Parliament on Tuesday. Tharoor said it seemed to him that a mob rule is going on where innocent people are being thrown in jail for no fault of theirs. He said the nuns should be released without delay and instead government should arrest the goons. തുറങ്കിലടച്ച സർക്കാരെ അന്യായമായി തുറങ്കിലടച്ച സർക്കാരെ ബിജെപി
सरकारे बीजेपी सरकारे ಒಟ್ಟುಗಳಿಚ್ಚೋ ಸೂಚಿಸೋ. It seems to be that there's a case of mob rule going on where innocent people are being thrown in jail for no fault of theirs without committing any crime. I think first of all they should be released without delay, and secondly they should do something about controlling. As we said in our protest, you should arrest the goons and not the nuns. Meanwhile, Kerala BJP Chief Rajiv Chandrasekhar said that the arrest of the two nuns and a tribal man was due to misunderstanding and miscommunication. Mention may be made that the two Catholic nuns from the Assisi Sisters of Mary Immaculate were arrested at Durg railway station in Chhattisgarh on Saturday, July 26, along with a young man while accompanying three women aged between 18 and 19 from Narayanpur district. They were charged with human trafficking and religious conversion. No, it is. I received information about this day before yesterday, and from the churches and the fathers there, and the party swung into action immediately. We contacted the Chhattisgarh government, we contacted the Home Minister of Chhattisgarh, we contacted the Union Home Ministry, and we received tremendous support from everywhere. It is certainly a case of misunderstanding and miscommunication, because the two nuns were accompanying three adult ladies who were being accompanied for providing jobs. They had parental consent, and unfortunately, because the church involved did not upload the details onto a portal that is statutorily required under the Placement Agencies Regulation Act under the laws of Chhattisgarh, there was a misunderstanding that they were transporting these women for trafficking or for conversion, or both. And that misunderstanding hopefully will be cleared up, because I have spoken about the facts to the government of Chhattisgarh. Our General Secretary Anup Antony is there clarifying the matter, and we will not rest till they get justice and the nuns are returned home. So the state is BJP rule state. Why it's taking? Is it tough? No, look, Chhattisgarh is a state that has a tremendous amount of challenges on conversion. We all know that. In 1967, the Congress government in Chhattisgarh, then the Madhya Pradesh, passed anti-conversion law. There's an anti-conversion law on the books as a law in Chhattisgarh. The Chhattisgarh government in 2013 passed the Private Placement Agencies Regulation Act, which also ensures that there is no conversion or trafficking. And the tribal communities in Chhattisgarh have been always vulnerable to conversion. So please understand that this is a legitimate issue for the people and the governments of Chhattisgarh. This particular case is not trafficking, nor is it about conversion. Unfortunately, because of a procedural lapse, the needle of suspicion pointed towards conversion or trafficking, which we are making some effort to clarify. A quick break, we'll be right back. Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Purubule 2026-27 session la admission khuli ase. Itu nimide selection test kane online application dibole paribo. Apply kurubole July 29 tak paribo. Kun admission nimide test dibole paribo bole JNV thaka district la bona fide resident hobole lage. Aro itu district te sarkari noilibi sarkari recognized school bra class 5 purina thakibole lage. Candidate to class sobte full academic session purina sarkari school ra class 3 or 4 pass hobole lage. Aru itu upor candidate to May 1 2014 or July 31st 2016 la majote janam kuriya laga hobole lage. JNV do co-educational residential school ase. Kode mota aru maiki laga alag alag hostel ase. Free education
boarding আৰু lodging আছে JNV দে কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ আৰু স্পৰ্টছ বি প্ৰমোট কৰে NCC স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ আৰু NSSP আছে ডিস্ট্ৰিক্ট খান দে 75% সিট তো rural areas la candidates খান নিমতে ৰিজাৰ্ভ আছে SC ST OBC আৰু দিব্যাংগ candidates খান নিমতে বি আছে আৰু মাইকি খান নিমতে সবসে কমতি হইলি বি 1/3 seats ৰিজাৰ্ভ আছে JNV bra 2025 JEE means day 4,492 students qualify hoise JEE Advanced 2024 day 1,083 NEET 2024 day 19,183 Our 2024-25 board exams day class 10 khan 99.49% our class 12 khan 99.29% pass hoise application form do NBS laga official website noile bi district te thaka JNV bra lobole pare aru itu free ase application do fill up koribina upload kori dibi noile bi school de bi submit koribole pare last date to July 29 2025 des Welcome back. India's 19-year-old chess sensation Divya Deshmukh created history on Monday by defeating fellow Indian and world number 5 Kinuru Hampi in the final of the Women's Chess World Cup at Batumi, Georgia. After both classical games in the final ended in draws, the title was decided in the rapid chess tiebreaker. While the first game in the shootout also ended without a winner, Divya capitalized on Hampi's errors in the second game, clinching victory with the black pieces. This marks the most significant achievement yet for the Nagpur teenager who is seated 18th in the tournament. Hampi, the reigning world rapid champion, was widely considered the favorite. Divya's rise has been steady. Last year, she dominated the World Junior Championship in Ahmedabad and played a crucial role in India's gold medal win at Budapest Chess Olympiad, where India entered as a top seed. The Indian women's contingent also made headlines with 4 players advancing to the quarterfinals, a remarkable feat that exceeds expectations. Manipur's previously thriving agricultural lands are now hauntingly quiet, reflecting the anxieties and doubts that have engulfed its farming community since ethnic strife began in May 2023. Once vital to the state's economy and the source of income for over 60% of its residents, agriculture in Manipur is currently suffering from the effects of the ongoing conflict between the Meitei and Kuki groups. Lush farmlands have transformed into no man's lands characterized not by farming equipment and crops but by barricades and predation. Manipur's lush green fields, once the lifeblood of its farming communities, now bear the scars of conflict. Since May 2023, ethnic clashes between the Meitei and Kuki groups have turned these fertile lands into zones of fear, where once bountiful harvests have faded into painful memories. In Ujung Makong village, located in Churachandpur district, we met Kaimin Lian, a farmer who hasn't cultivated his 1-hectare farmland in nearly 2 years. His land lies within the buffer zone demarcated after the violence, making it unsafe to farm. Around 30 families in the village own nearly 15 hectares of farmland, all of it now abandoned due to ongoing tensions. The impact has been devastating, robbing farmers of their livelihoods and dealing a severe blow to the region's rural economy and social fabric. आज हमारी खेती देखने के लिए गया हूँ यहाँ पर, और इसमें बफर जोन होने की वजह से खेती कर नहीं पा रहा हूँ, और इसमें घास बहुत उठ गया, और इसमें बड़ा घास जो है बड़ा हो जाता है, छोटा वाला तो दवाई मार के भी ख़त्म कर सकता है, और इसमें हम लोग अभी तक कुछ मदद नहीं मिल रहा हूँ, इसीलिए बहुत दुखी में हूँ हमने। Over 60% of Manipur's population depends on agriculture to survive.
with the sector forming the backbone of the state's economy, contributing nearly 22% to the gross state domestic product. But that backbone is now under strain. Ethnic tensions between the Kuki and Meitei communities have cast a long shadow over farming. Fields once full of promise now lie still, caught in the grip of fear. On both sides of the buffer zone, farmers are unable to till their land, not due to drought or poor soil, but because of security concerns. It's as if the plow has been replaced by uncertainty and crops by caution. Thiam Bharat Singh, Associate Professor at the Center for Study of Social Inclusion and Inclusive Policy, Manipur University, paints a stark picture of the crisis, one where livelihoods are withering before seeds can even be sown. This conflict has affected the agricultural farming in Manipur. For instance, it has been estimated that 5,127 hectares of agricultural land remain uncultivated for the past 2 years. So it has led to the loss of about more than 15,000 metric ton of rice. So just think about it, because when there is a significant reduction in food production, how it will affect the gross state domestic product. As I mentioned earlier, 22% of the gross state domestic product of Manipur belong to agricultural sectors. So now agriculture has been weakened by this ethnic conflict, and then there is also shortage of food production. The ongoing conflict has left Manipur's agrarian backbone bruised and brittle. Without urgent resolution and support, thousands of farmers may remain trapped in uncertainty, threatening both food security and long-term rural stability. Union Home Minister Amit Shah on Tuesday blamed the Congress for the terrorist activities carried out by Pakistan in India. Speaking in the Parliament, Shah said that the root of all terrorism is Pakistan and Pakistan is Congress' mistake. Referring to the Prevention of Terrorism Act, which was passed during Atal Bihari Vajpayee's prime ministership, he said that after the UPA government came to power, the government scrapped the act. मान्यवर, मैं अभी भी एक बात इस महान सदन में, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते, पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, कल विदेश मंत्री जी बता रहे थे शर्म अल शेख सम्मेलन का बलूचिस्तान ब्लंडर, जिसने पाकिस्तान को हमारे साथ चर्चा करने के लिए इक्वल फुटिंग पर ला दिया। मान्यवर, अब ये टेररिज्म की बात करते हैं, मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा, और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते। और मान्यवर, 2004
2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.